Hello, my dear students. I am Saroj Kumar Sethi, lecturer in chemistry of Nalanda Vidya Mandir, Plus 2 Science College, Barampur. So, in our last class, we were discussed about that is mole concept and some related problems. With that knowledge of mole concept, we shall proceed to our next topic, that is stoichiometry coefficient and its calculations. So, here, what is stoichiometry coefficient? First thing we need to know. Stoichiometry coefficient means gote chemical reaction that is in balanced form. Gote balanced chemical reaction re jaha bhi number use hochi se number ja jetole gote reactant side or product side jo number use hochi se number kichi denote करे किछि amount of substance को indicate करे. That numbers are nothing but that numbers are stoichiometry coefficient. बुझी पारलो कि नहीं पिले? तो first thing गोटे for example आमे जानिबा ना combustion of carbon, that is burning of piece of paper. That burning of piece of paper, how that chemical process can be represented? That burning of paper can be represented as an equation. That is, inside the paper carbon element is there. When that paper is burning, then with the help of oxygen it gives carbon dioxide gas. It gives carbon dioxide gas. So this is the chemical process which can be represented as a, that is reaction, that is equation. The chemical process which can be expressed as in terms of symbols of reactant side and product side. This is reactant side, this is reactant side, and this is product side. Product side. So when a chemical process or chemical reactions can be represented as the symbols of compounds, that is symbols of compounds which present as a reactant and a product, that is known as a chemical equation. And with the balanced chemical equation, whatever the numbers are being used, that numbers which indicate the amount of reactant and product, that is known as a that is stoichiometry coefficient. For example, if we take that is hydrogen gas and oxygen gas combine to form water. This is hydrogen gas and oxygen gas combine to form water. Is it a balanced reaction? Is it a balanced equation? No, it is not a balanced equation, because here 2 oxygen is there from the reactant side. This is reactant side, reactant side, reactant side, and here in product side only 1 oxygen is there. So this is product side, this is product side. So we need to balance this equation. Then how we can proceed? If we put here 2, then oxygen getting balance, but here hydrogen not balanced from the both the side. A3 4 hydrogen अछि, A3 2 hydrogen अछि. Aku jodi ame multiply koriya 2, now this chemical reactions getting balanced equation. Am I right or not? तो एबे आमे देखिबा बेले ना एइथिरे एइ जो बैलेंस रिएक्शन रे कौन कौन यूज हेची, कौन कौन नंबर यूज हेची, that is 2, here also 2. These numbers are known as stoichiometry. These numbers are known as stoichiometry coefficient. These are the coefficient and known as stoichiometry coefficient. All of you understood or not? So what is the definition? Stoichiometry means the balanced chemical equation gives quantitative relationship between the reactants and products of reaction in terms of moles, masses, volume and molecules. That numerical amount is known as stoichiometry coefficient. For example, we can take example, that is a hydrogen gas react with oxygen gas to form a water. So here, if we take the mole ratio, then we can say that 2 mole of hydrogen gas react with 1 mole. Here no number is there, means here it is 1 mole. So 1 mole of
1 mole of oxygen gas react with react to hydrogen to form a water. भल से देखि पारछो पिले 2 mole of hydrogen gas react with 1 mole of oxygen gas to form 2 mole of water. Similarly आमे जदि mass नबा 2 mole of hydrogen केते mass हबो, that is 4 gram, because each hydrogen having 1 atomic mass, that is 1.008. तो आपको हमें 1 बोली consider करू. 4 hydrogen, that means 4, so 4 gram. 1 mole of O2 gas, 1 mole of oxygen means that it contain 2 oxygen atom, each oxygen atoms having 16 atomic mass, that is 32 gram of oxygen gas, 1 mole of oxygen gas combined to give a 2 mole of water. 1 mole of water having 18 gram, so 2 mole of water, that is 36 gram. So if you take volume ratio, then 2 volume, here 1 volume, here also 2 volume. So this is the number. This number, it shows the quantity. It shows the quantity of a particular compound. That number is known as stoichiometric coefficient. And one thing we need to keep our mind that in a balanced reaction, that equation, the chemical equation should be balanced. Otherwise, we cannot consider the number is a stoichiometric coefficient. Yes, the number which indicate the amount of substance, that substance may be in the reactant side, that substance may be in the product side. That number is known as a stoichiometric coefficient. From that balanced chemical equation, गोटे balanced chemical equation रे जो number show करची, गोटे compound रे जो number जो coefficient show करची, that number which indicate the amount, that is known as stoichiometric coefficient. If we talk about its calculations, what are the types of stoichiometric coefficient calculations are there, then we may say there are generally 4 types of calculations are there. What are those? Let's see. First one, that is mass-mass relationship, mass-mass relationship, then mass-mole relationship, then mass-volume relationship, then volume-volume relationship. हेला बिली तो फास्ट आमको बुझियो पड़ियो व्हाट इज मास मास रिलेशनशिप. अच्छा सही गोटे केमिकल इक्वेशन नबा जोटा आम आगु नहीं, दैट इज कार्बन प्लस O2, दैट इज कंबशन ऑफ कार्बन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन gaseous form, this carbon is present in solid form, and this oxygen is present as a gaseous form. So here mass relationship means we need to take mass of reactant and mass of product. When we are comparing ourselves, that reactant is expressed in grams and the product also can be expressed in grams, then that is gram is the unit of mass. Am I right or not? So mass relationship means that is the mass. When we are taking relationship between reactants and product side in terms of mass, that is known as mass relationship. तो जेते बेले गोटे केमिकल प्रोसेस रे रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट मानकर आमे गोटे मास रे कंसीडर करछे. मास मीन्स कोन कि सम ग्राम्स और सम केजीस, that is relation, that type of relationship is known as mass relationship. गोटे एग्जांपल आमे देखिया पिले, गोटे एग्जांपल देखिया, that is first one, calculate the amount of water in grams produced by combustion of 50 gram of methane. All of you may be getting confused that how water can be taken as a grams. Pile first year रे हमें पढ़िचे, that is molecular mass. Molecular mass, if it is considered as a gram, it is expressed as in gram, then it is said to be gram molecular mass. So yes, we can take that is water, amount of water in gram, then it is said to be gram molecular mass. So ये पचारची ना केते amount of water in gram रे बाहरिबो बा produce करिबो by combustion of 50 gram of methane. So what is the formula of methane? That is CH4. जेतले CH4 combustion करचे, combustion means जलिबा पिले, combustion करची आमे जानिचे for combustion, for burning, oxygen is the supporter gas. Oxygen is the supporter gas. जेतले जळे गोटे जिनिस से समय ऑक्सीजन गैस टा सी भलो सपोर्ट करे जलिया पे.
So combustion of methane gas in presence of O2 it gives carbon dioxide and water. इक्वेशन टा केमिति आगुर थिला आमे आकु एमिति लिखि पारथन्ते that is methane gas react with that is on combustion that is in presence of air it gives carbon dioxide gas plus water. Hele now is it a balanced reaction? Is it a balanced equation? No. Why? Because oxygen from the both the side from reactant side and product sides are not equal, so we need to balance. 4 number of hydrogen is there, so we need to balance the hydrogen. So to make 4 atoms of hydrogen for product side we need to multiply 2 here, we need to multiply 2 here. Now oxygen is that is 2 and here 2 4, so we need to place 2. This is the balanced equation which has written here in answer. Okay, so in a balanced reaction now we can take what is the coefficient. So here no number means that is 1 mole, here 2 is written that is 2 mole of oxygen, here no number means that is 1 mole of carbon dioxide gas produced and 2 number of that is 2 mole of water molecules produced. So according to question सी पचारिछि ना केते ग्राम वाटर प्रोड्यूस करिवो जेतेबेले 50 ग्राम मिथेन नवा. तो एबे हमें देखिबा 1 मोल ऑफ मिथेन हाउ मच मॉलिक्यूलर मास इट ऑक्युपाइज, दैट इज 16 ग्राम. सो 16 ग्राम ऑफ मिथेन it gives that is 36 ग्राम ऑफ वाटर. हाँ कि नहीं बोले? सो 50 ग्राम ऑफ मिथेन केतिकी दबो 36 डिवाइड बाय 16 into 50. So answer will be 112.5 gram of water will produce when 50 gram of methane is on combustion. जेतेबेले मिथेन टा combustion process रहिबो से समय रे 112.5 gram of water produce करियो. I hope all of you understood. Now move on to next example. Next example is that is calculate the mass of calcium oxide in gram produced from heating 45 gram of limestone. What is limestone pile? Limestone is the calcium carbonate. Limestone ताको हमें sometimes marble भी कहू, से गोटे marble भी हमें ताको कहू. जनरली जो marble घरे पड़े flooring रे से marble र माने chemical formula होची that is calcium carbonate. So आमे ये देखिबा ना जेतेले गोटे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करू, गोटे कैल्शियम कार्बोनेट को आमे हीट करू, ये होची कैल्शियम कार्बोनेट. आकु जदि आमे हीट करिवा सी डिकम्पोज करिग्री गोटे कंपाउंड रु जदि मेनी कंपाउंड्स दोची दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट इफ इट गिव्स many compounds that is known as decomposition reaction. In decomposition of calcium carbonate we will get calcium oxide and CO2. According to question, what amount of calcium oxide will produce when 45 gram of limestone is heated? So simply we can take that is one mole of 1 mole. Here 1 mole means that is how much? 100 gram. 100 gram of calcium carbonate on decomposition it gives 56 gram of calcium oxide. So 45 gram of limestone will give that is 45 gram of calcium carbonate, it will give calcium oxide that is 56 divided by 100 into 45, that is 25.2 gram. All of you understood or not? Now move on to next type, that is mass mole relationship. Mass mole relationship. Mass mole relationship माने कौन पिले? देखो एडी गोटे जिनिस जानिया ना एडी जो नबा गोटे मास रिएक्टेंट साइड किंवा प्रोडक्ट साइड, ए जो मास नबा गोटे रिएक्टेंट साइड आउ एटा जो मोल नबा गोटे प्रोडक्ट साइड. कारण आमे जानिचे रिएक्टेंट को कौन कर रिएक्टेंट कन्वर्ट होची प्रोडक्ट को.
तो जदि आम मासटा रिएक्टेंट साइड नौचे देन प्रोडक्ट आम नवा पड़ो दैट इज मोल इन टर्म्स ऑफ मोल. सो दिस इज द मास मोल रिलेशनशिप. अदरवाइज आम जदि मासटा को प्रोडक्ट साइड नौचे ये हूँ रिएक्टेंट ये हूँ रिएक्टेंट ये हूँ रिएक्टेंट ये दौर पे प्रोडक्ट. तो या जदि आम मोल नौचे देन आपको आमको नवा पड़ो मास. सो इट इज द मास मोस रिलेशनशिप. तो मोस्ट ऑफ केसेस इन द मास मोल रिलेशनशिप जनरली या कौन करूँ या मास नौ या मास नौ या मोल्स नौ इन जनरल है. तो एबे देखिबा गोटे गोटे प्रॉब्लम यार एग्जांपल देखिबा पिले दैट इज calculate the mole of calcium oxide produced from heating 50 gram of calcium carbonate. Same that is reaction with a different concept, that is mass mole relationship. ये देखिए पिले गोटे जिनस ना सी क्वेश्चन पचार that is calculate the mole of calcium oxide produced from heating 50 gram of calcium carbonate. देखो आम एटा हूँ रिएक्शन आमर calcium carbonate को आम हिट कले आमको मिल calcium oxide प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये देखिले आम 1 मोल अच्छी किसी ना मैंने कौन दैट इज 1 मोल ऑफ calcium carbonate it gives 1 मोल ऑफ calcium oxide. 1 mole is nothing but it is the 100 gram of calcium carbonate. It gives 1 mole of calcium oxide. If we take 50 gram of calcium carbonate, then it will give that is 1 mole divided by 100 gram into 50, that is 0.5 mole of कौन पिले calcium oxide. So 50 gram of calcium carbonate will give mole of calcium oxide, that is 0.5 mole of calcium oxide. So here mass mole relationship means one of the reactant can be taken as a in terms of mass, and one of the product from chemical reaction can be taken as a mole. So this is the mass mole relationship, mass moles relationship. हाँ कि नहीं बोले बुझिल कि आउटे टाइप रे देखिबा दैट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप टा कोन. तो बुझा पड़ले आई होप समस्त को बुझा पड़थियो. एबे जिबा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जिबा में दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. देखो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मीन्स व्हाट. गोटे आम रिएक्टेंट नौचे ये हूँ आम गोटे रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट को आम किसी केमिकल प्रोसेस द्वारा सी चेंज होची प्रोडक्ट को. तो ये आम देखा जदि रिएक्टेंट को कौन नि मास नि या जदि मास नि या जदि मास नि देन आपको निश्चित भाव में किसी वॉल्यूम नि या किसी वॉल्यूम रे नि. सो दैट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. बुझीपार रिएक्टेंट को जदि मास नि प्रोडक्ट को वॉल्यूम नि. अदरवाइज रिएक्टेंट को वॉल्यूम नि देन प्रोडक्ट को मास नि. तो जनरली मास वॉल्यूम रिलेशनशिप रे मासटा को नि जाए रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट को नि जाए वॉल्यूम साइड बा वॉल्यूम को वॉल्यूम रे एक्सप्रेस करा जाए. गोटे प्रोडक्टा केमिकल रिएक्शन रो प्रोडक्टा को वॉल्यूम रे कंसीडर करा जाए बा एक्सप्रेस करा जाए. सो दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. गोटे एग्जांपल नबा व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 at NTP be obtained on treating 1 gram of marble. Marble is nothing but that is calcium carbonate. Again same example but different concept, that is mass volume relationship. How it can be understand, let's see. Here calcium carbonate on decomposition with hydrogen chloride, it gives calcium chloride, water and carbon dioxide gas. तो ये हमें देखा जिते calcium carbonate को ये इक्वेशन रे calcium carbonate को रिएक्ट कराई हाइड्रोजन क्लोराइड को. तो सी दे calcium chloride, water
आउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्वेश्चन रे पचारछि ना 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आकु जदि आमे 1 ग्राम नबा देन केते वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलिबो केते वॉल्यूम बा हाउ मच इन लीटर कैल्शियम कार्बोनेट वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग लेट्स सी एठी हमें जानले 100 ग्राम दैट इज 100 ग्राम of calcium carbonate marble means that is calcium carbonate gives that is 1 mole of CO2 that is 1 mole of any gas मु काली कहिथिली पिले एठी गोटे जिंस मन रखिया पड़ियो एठी मु तुमको मन पकोसी 1 mole of any gas at NTP condition that is 1 mole of any gas is that is contained 22.4 liter hela 1 mole of any gas at NTP condition that is 22.4 liter so 100 gram of calcium carbonate give 22.4 liter of CO2 1 gram of calcium carbonate it will give 22.4 divided by 100 into 1 that is 0.224 liter 0.224 liter of whom of what it will give of CO2 है ये आम CO2 लिखिपर of CO2 gas बुझल पिले समझते तो एबे जीवा नेक्स्ट पार्ट दैट इज वॉल्यूम रिलेशनशिप देखिबा ये कौन हो वॉल्यूम रिलेशनशिप रे एठी हमें दीटा जिनस को वॉल्यूम नबा एटा होची रिएक्टेंट देखो एठी होची रिएक्टेंट ये होची रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट कौन कला कौन कन्वर्ट करची प्रोडक्ट को कन्वर्ट करची तो ये रिएक्टेंट को आम वॉल्यूम रे नबा इन ml एटा भी प्रोडक्ट को भी ये भी वॉल्यूम नबा इन ml है दैट इज वॉल्यूम इन ml तो ये देखिबा गोटे रिएक्शन रे जतले केमिकल इक्वेशन रे रिएक्टेंट अच्छी प्रोडक्ट अच्छी केते वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट केते वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को कन्वर्ट करची गोटे केमिकल रिएक्शन रे केते वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट सी केते वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को चेंज होची बा कन्वर्ट करची बा सी रिएक्शन रे गोटे कंप्लीट करोची गोटे एग्जांपल देखिबा एटा देखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी दैट वुड बी रिक्वायर्ड to convert 5.2 liter of carbon monoxide to carbon dioxide. Question is पचारची calculate the volume of oxygen at NTP that would be required to convert 5.2 liter of carbon monoxide to carbon dioxide. First reaction बाहर करो ये होची कार्बन मोनोक्साइड आपको आम रिएक्शन करे O2 सहित ये दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड सहित इज इट ए बैलेंस रिएक्शन नो बिकॉज ऑक्सीजन फ्रॉम द बोथ द साइड नॉट बैलेंस्ड so we need to balance so if we 2 here and if we 2 here then equation getting balanced ए इक्वेशन बर्तमान बैलेंस हो गला तो एबे आमे देखिबा क्वेश्चन रे पचाची व्हाट वॉल्यूम ऑफ दैट इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 liter of carbon monoxide that is in 5.2 liter of carbon monoxide तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड सो एटा जानिया पई हमको सिंपल गोटे जिनस बुझिया पड़ियो ना एटा केते मोल अछि 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड मीन्स दैट इज 2 into 22.4 liter 2 into 22.4 liter of carbon monoxide it required 1 mole that is 22.4 liter क्वेश्चन रे पचारछि 5.2 एटा होछि क्वेश्चन पचारछि 5.2 liter CO सी कौन दब सी कौन दब दैट इज 22.4 डिवाइड बाय 2 into 22.4 into
5.2 जोटा कि कराई देख आंसरटा बाहर 2.6 लिटर। बुझिल समस्ते? ये थिला आमर एग्जांपल फ्रॉम द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। नेक्स्ट जीवा हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल that is how many moles of nitrogen are needed to produce 8.2 moles of ammonia। 8.2 moles of ammonia by reaction। देखो पिले फास्ट आमको लिखा पड़ो जे नाइट्रोजन आउ हाइड्रोजन गैस मिसिक एमोनिया तैयारी कर। तो ये देखा ये हूँ बैलेंस रिएक्शनटा ये ऑलरेडी बैलेंस अच्छी पिले। तो ये किसी ना मैंने हूँ ये निहाई केते मोल्स नाइट्रोजन दरकार बा केते वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दरकार हाँ कि बा ताको आमे बुझी परिबा केते मोल ऑफ नाइट्रोजन दरकार कोथि पई ना 8.2 मोल ऑफ एमोनिया तैयारी करिया पई हैला। एटा हाउ मच मोल दैट इज मोल केते दरकार नाइट्रोजन पई जोथि कि 8.2 कौन करियो एमोनिया तैयारी करिवो 8.2 मोल ऑफ एमोनिया तैयारी करियो। क्वेश्चन सिंपली आमे लिखि परिबा that is 2 mole of ammonia are produced from 1 mole of N2 gas। So 8.2 mole of NH3 produced from that is 1 divided by 2 into 8.2 that is 4.1 mole of N2। So simple। ये थिला हमर पिले एग्जांपल फ्रॉम मॉलिक्यूल that is वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। एबे ए जो 3-4टा हम पढ़िले that is mass mass relationship and mass mole relationship मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप यही 4टा रु किछ 2टा प्रॉब्लम्स ये तुम मानक करिया दिखाई से 2टा प्रॉब्लम्स तुम निजे कर एग्जांपल को बेस करके पिले आमर 2टा प्रॉब्लम ये अच्छी देख ये 2टा हूँ प्रॉब्लम्स भल से समस्ते देख क्वेश्चन कौन दिखाई पिले क्वेश्चन दिखाई chlorine is prepared in the laboratory by treating MnO2 with aqueous HCl according to the reaction that is MnO2 4HCl give rises to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ये रिएक्शन आमे देखिबा ये रिएक्शन आमे लिखिबा that is MnO2 plus that is 4HCl। it is the balanced reaction। let's check me whether the reaction is balanced or not, whether that equation is balanced or not। Here 4 chlorine is there, 4 chlorine 2 chlorine 2 chlorine 4 chlorine, okay। 1 manganese here 1 manganese, 4 hydrogen here 4 hydrogen, 2 oxygen here also 2 oxygen। yes it is the balanced equation। so what it has asked in this question, it has asked that is how many grams of HCl react with 5 gram of MnO2। केते ग्राम of HCl केते ग्राम of HCl से रिएक्ट करिवो केते ग्राम सहित 5 ग्राम of MnO2 हैला। एबे जिंस एटा होची पिले बैलेंस रिएक्शन याकू आमे कोन बाहर करिया मॉलिक्यूलर मासटा बाहर करिया। तो what is the molecular mass of MnO2? that is 1 mole। it is present in 1 mole। yes it is present in 1 mole। it is present in 4 mole। तो यार जब molecular mass बाहर करिया that is it is 55 प्लस ये गोटे ऑक्सीजन 16 2टा ऑक्सीजन that is 32। तो केते होला पिले ये होची 32 ये प्लस 55 that is 87 ग्राम। 87 ग्राम ये दौजी केते ग्राम 87 ग्राम ये दौची आपको हमें बॉक्स करदे बुझिया अदरवाइज आपको हमें बहुत क्लीयरली लिखा ये बहुत इंपोर्टेंट पिले जिनसा बुझिया दरकार। देख यहाँ हूँ 4 मोल अच्छी ये हूँ केते मोल दैट इज 1 मोल अच्छी है। सी पचार सी कौन पचार पिले ना 5 ग्राम MnO2 5 ग्राम MnO2
react with how much gram of HCl, react with what gram of HCl, हाँ कि नहीं, ये हूँ आमर क्वेश्चन। यार आम मॉलिक्यूलर मास बाहर करिया 55 प्लस 32 दैट इज ये हूँ पिले 87 ग्राम, 87 ग्राम of MnO2 it react with 4 mole of HCl. What is the molecular mass of 4 mole of HCl? 4 into molecular mass of HCl that is 1 ये हूँ 35.5 that is 36.5 या को आम मल्टीप्लाई करिया ये 4 5 20 शून्य रखी नेली 2 4 24 2 26 ये हूँ 6 ये हूँ 4 3 12 ये हूँ 14 ये जो 14 देख पे ये गोटे मझे गोटे कार पड़े ये हूँ 146 दैट इज 1460 या को आम डेसिमल नवा ये गोटे डेसिमल नवा दैट इज 146 व्हाट 146 ग्राम। जदि 87 ग्राम ऑफ MnO2 it react with 146 gram of what 146 gram of HCl, then 5 gram of MnO2 it will react how much gram of HCl, that is 146 divided by 87, okay, then into 5 है या को आम कौन करवा आपको मल्टीप्लाई करिया 5 6 द 30 ये हूँ 0 5 को 20 ये हूँ 23 3 रखिले 2 5 के 5 2 7 730 डिवाइड बाय 87 या को जदि आम डिवाइड करवा केते आसीबो ये हूँ 87 ये हूँ 730 तो 87 अच्छी मीन्स 864 एवं ये देखा 856 दैट इज 86 पकेवा 856 ये हूँ 6 5 रहा देन 864 64 ये 5 केते 64 5 दैट इज 69 64 5 69 आपको भल से लिखिए पे 69 आपको आम कौन करिया माइनस करिया दैट इज केते ये रहा 10 आउट 10 रू 6 गले दैट इज 4 ये हूँ 2 तो ये हूँ केते 3 आपको आम पॉइंट पकेवा ये 340 ये आम देखा 8 3 जा 24 तो 24 में भी न बसीए 28 3 जा 8 3 जा 24 तो आपको आम 3 नवा है 3 7 21 ये हूँ 1 2 रहा 3 8 24 24 2 26 ये रहा 10 रू 1 गले 0 10 रू 1 गले 9 देन ये रहा 3 3 3 रू 6 गले के या 13 आसो 13 रू 6 गले 7 तो पुणी ये आसला 790 तो ये आसला 790 आपको पुणी आउ के पका हम 790 आसला मीन ये पुणी पका हम ये 690 आउची तो ये पुणी पका हम 80 नॉट 80 दैट इज 9 दैट इज 9 सो आंसर इज 8.39 ग्राम yes answer is 8.39 gram 8.39 ग्राम देखो पिले आंसर आम मिलगला दैट इज 8.39 ग्राम ऑफ HCl is required 8.38 or 8.39 that is approximately gram of hydrochloric acid can be reacted with 5 gram of MnO2. All of you understood or not? Then next question jiba ये हूँ पिले नेक्स्ट क्वेश्चन ये हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन देख भल से कौन देती ये क्वेश्चन देखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 5 लीटर ऑफ ब्यूटेन गैस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 फर्स्ट आमको देखिए पड़ो क्वेश्चन कौन देती क्वेश्चन देती दैट इज 5 लीटर ऑफ ब्यूटेन गैस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन गैस केमिकल फॉर्मूला पे मन पकाओ ब्यूटेन आल्केन दैट इज CnH2n+2 तो ये आम लिखिपर कार्बन 4 हाइड्रोजन 2n+2
8 + 2 दैट इज 10 ये हूँ ब्यूटेन गैस आपको आम कंबसन करा दैट इज O2 सहित कंबसन करवा ये कौन दब ये दब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर है चार्टा कार्बन अच्छी आपको आम बैलेंस करिया आपको आम बैलेंस करिया 4 कार्बन बैलेंस है एबे देखिए हाइड्रोजन बैलेंस 10टा हाइड्रोजन अच्छी 5 वाटर एबे आम ऑक्सीजन बैलेंस करिया 4 2 जा 8 ये हूँ 5 13 8 + 5 13 एपटे आमको 13 ऑक्सीजन नवा पड़ो तो 13 ने सेपटे 26 ये हूँ 13 2 जा 26 ऑक्सीजन एटम आपको डिवाइड बाय 2 करदा देन ये पुणी पड़े आसला 13 ऑक्सीजन बुझे कि नहीं तो यही फ्रैक्शन टाक आपको आम कैंसिल करने कौन करिया ये आम कौन करिया कैंसिल करने ये रिएक्शन टाक कौन करिया मल्टीप्लाई करदा बाय 2 तो कौन हम यहाँ दैट इज 2C4H10 प्लस 13O2 गिव राइजेस टू 8CO2 प्लस 10H2O ये हूँ आम बैलेंस रिएक्शनटा ये आम गोटे जिन देखा पड़ो ना क्वेश्चन सी कौन पचार कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 5 लीटर ऑफ butane gas. So what is the mole of butane gas? That is 2 mole. So 2 mole means we can take that is in volume 2 into 22.4 liter. 2 into 22.4 liter of butane. It react with that is 13 mole. It react with 13 mole. 13 into 22.4 liter of कौन रे 4 liter of oxygen gas. According to question, 5 liter of butane gas, it will produce O2 gas or it will require amount of O2 gas in volume that is 13 into 22.4 liter divided by 2 into 22.4 liter into केते 5 तो केते आसियो पिले ये तो कैंसिल हो ये कैंसिल हो तो दैट इज 13 into 5 केता हम ये हूँ 5 ये हूँ 65 डिवाइड 2 केता आसियो दैट इज 2 3 जा 6 2 2 जा 4.5 सो दिस इज द आंसर 32.5 liter 32.5 liter of O2 is required 5 liter of O2 is required for 5 liter combustion of butane gas for combustion of 5 liter butane gas all of you understood or not ता सहित क्वेश्चन से पचारची आमर ये कौन कनक्लूजन बाहर ये आम कनक्लूजन बाहर ये लिखी दूसरी 5 liter for 5 liter butane gas 5 liter butane gas 32.5 liter of oxygen gas is required oxygen gas is required है तो एबे नेक्स्ट देखिबा ना व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 इज फॉर्म 5 लीटर रे जदि 5 लीटर रे जदि एतिक लीटर 2 into 22.4 लीटर ऑफ ब्यूटेन गैस इट गिव्स 4 मोल ऑफ CO2 देन केते दबो देखो पहिले ए जिनस टिके हमें देखिबा एतिक बुझले समस्ते या को टिके ऊपर नहीं होची देखो देखो तो आंसर हमें जान ले एबे हमें एटा देखिया देखो ये पुणे आउते लिखि देबा ब्यूटेन गैस दैट इज C4H10 प्लस O2 गिव राइजेस टू दैट इज CO2 प्लस वाटर आपको हमें बैलेंस करदा पहले जिम बैलेंस करदा सिंध बैलेंस करदा दैट इज 4CO2 ये होची 5H2O हो कि नहीं देन ये होची 13/2 तो आपको हमें पूरा बैलेंस जानिबा दैट इज 2C4H10 plus 13O2 give rises to that is 8CO2 plus
H2O. तो क्वेश्चन होची पिले हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल फॉर्म फ्रॉम 5 लीटर ऑफ ब्यूटेन. तो एडी हमें देखिए जे 2 into 22.4 liter of butane it gives what, that is 8 liter of what, 8 mole of CO2 means that is 8 into 22.4 4 liter of CO2. then 5 liter पे केते हो पिले 8 into 22.4 divided by 2 into 22.4 into 5. आपको हमें कैंसिल कर दो पहले, ये कैंसिल कर दो, दैट इज 2 4 जा 8, तो टोटल 20 लीटर. तो 20 लीटर ऑफ CO2 गैस ये प्रोड्यूस करियो हला केते ना 5 लीटर ऑफ ब्यूटेन गैस produces 20 लीटर ऑफ CO2. समस्ते बुझीपार बोधे एमती टाइप स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स तुम जनरली क्वेश्चन रे आसे इन बोथ बोर्ड एंड दैट इज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. जेहेतु 11th क्लास तो बोर्ड ना से एमती रिलेटेड क्वेश्चंस किसी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसे. ये थिला हमर स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट एंड इट्स कैलकुलेशंस. तो नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा किछि अदर टॉपिक्स. तो फॉर दिस लेक्चर दिस मच ओनली. सो आज एतिकी.